Hello, hi everyone, good evening. And this video is in continuation with old series that we had shot. So I put up in the group a few days back about what is tax harvesting, how many of you are doing it, and how many of you are not doing it. So in that there are so many people who had put in that they are not aware what is tax harvesting exactly and how to go about it. So I have been doing it for quite some time now, and I think it is a good tool to have. So let us understand very quickly about tax harvesting. So there are two types of tax harvesting. One can be profit harvesting, the other will be the loss harvesting. So if you see what is the principle of tax harvesting, basically you are just milking out the benefits of what already has been given by the government. So those who have been investing for quite some time would know there is one thing called as LTCG, which stands for long term capital gains. Okay. And the other is STCG, which stands for short term capital gains. So the basic difference is anything that you have been holding for more than 1 year, stands for equity. So if you are holding it for more than 1 year, then this comes under the profits that you make under this thing. Equity for holding it for more than 1 year comes under LTCG. If you are holding it for less than 1 year, then it comes under STCG, which is short term capital gains. But what we are focused on right now is long-term capital gains, because we believe that we are value investors. We would love to hold the company for quite some time or the mutual funds for quite some time. But then earlier LTCG or the long-term gains were not there. I think around 2018 it came that you have to pay taxes on your profits that you are making for even for holding it for a long period of time. Now what is the tax? This is 10% of profits that you generate. Okay, but this 10% is only for more than 1 lakh. So I have put it here. So it is only for more than 1 lakh profits. Beyond that you have to pay the tax. So for the first 1 lakh you don't have to pay any tax, the profit that you are generating. I hope this is clear. So when this is clear that we are not going to pay any tax, but lot of times what happens is we may not be looking at our gains, we may not be booking any profits any year. So let us look at two scenarios, how we can understand this and how we can milk it for our benefit. So scenario one is the one where suppose your profit today, this is a hypothetical example, this doesn't work like this, but this is just an example. So suppose today in scenario one your profit is 1 lakh in your mutual fund account. I'm not even talking about stocks right now. Let us make it that it has been a mutual fund which you have been holding for 2-3 years now, and now the profit is more than 1 lakh. Okay, suppose in the second year you generate 1 more lakh profit, in the third year you generate 1 more lakh, in fourth year you generate 1 more lakh. So hypothetical example where I am considering that you are generating 1 lakh profit each year, and in the 10th, by the 10th year you have generated 10 lakh profit. Okay, but in this you haven't touched your capital, you have kept it as it is for quite some time, and then whatever you want to decide you will be doing at the 10th year. Okay, this is fine. Now scenario 2 is one wherein you have again 1 lakh profit, but what you are doing is you are booking the profit today. 1 lakh profit you are booking it today. Then second year also you are getting 1 lakh profit, then you are booking it here. Third year also you are booking 1 lakh, your fourth year 1 lakh, and then fifth year 1 lakh. So what you are doing is, since you knew that there is a 1 lakh exemption limit for long-term capital gains, so you are just booking profit every year up to 1 lakh. Now what is the difference is, let me show you this thing. So suppose here in scenario 1, so by the 10th year you are booking a profit of around 10 lakh. Okay, you are booking a profit of 10 lakh, 1 lakh is exempted, so the tax that you have to pay would be on 9 lakh, right? And how much? 10% I said, so it will be 90,000. So you are paying a 90,000 tax here. Scenario 2 is where
So what happens here is, so you have been booking every year 1 lakh profit. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्स पेड कैसे हो जाएगा? सो लास्ट ईयर में 1 लाख प्रॉफिट है तो टैक्स पेड 0, and before that also the every other year, so you have been booking 1 lakh profit. So for 1 lakh profit, you know that the tax is exempted, so you may not pay any tax at all. So by doing tax profit harvesting, what you are doing is you may essentially milk some more money and end up not paying extra taxes that you may pay by this method. I hope this is clear. So यहाँ पे सिनेरियो 1 में we are paying around 90,000 का टैक्स, एंड सिनेरियो 2 by milking it we are giving no tax at all. But someone from the group will definitely ask this thing, but then if you are booking profits every year, the compounding would be lost. Because if you are booking a profit of around 1 lakh every year, how would you reinvest it, and what is the problem? So just to prevent this thing from losing the effect of compounding but still able to harvest this thing, what we will do is, so just see, this is a snapshot of what I did a few days back. So if you see, I did a buy and this is a sell order. So buy order is there and just below this a sell order is there. So this was my holding for quite some time. The sell order is for 94,000 rupees and order date, can you see the NAV date? NAV date comes at 19 March. I did the order at 19 March. I think it was performed at night. And the NAV date for buying is as well is 19 March. Now, can you understand this? So suppose my invested amount is say 1 lakh. Okay. Now my profit is 1 lakh. This is just a hypothetical example to make it easy for you. So profit is 1 lakh and total corpus currently it will be around 2 lakh. Is it clear? So if I book a profit of 1 lakh but then I reinvest it, entire money reinvest. So यहाँ पे इस डेट पे कोई एक NAV होगी म्यूचुअल फंड की. So जितने का मैंने बेचा उतने ही पैसे का मैं उसको खरीदने वाला हूँ. So what I am doing is, so I sold worth 2 lakh. I have to buy again worth 2 lakh. So what happened is, ultimately it is just like कि आपने same price से sell किया, same price पे buy किया, but then in the mean process आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेशन शो कर दिया. सो आपका जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, ठीक है, बस वो चीज़ अनरियलाइज की जगह अब रियलाइज दिखने लगेगी. बट देन आप बोलोगे कि अगर मैं रियलाइज करके इसको सेल करके सिर्फ बैठ जाऊं, देन द कंपाउंडिंग इज लॉस्ट. सो व्हाट वी डू इज वी बाय एंड सेल एट द सेम प्राइस, सो दैट एक अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा रियलाइज प्रॉफिट में शो हो जाए, और जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है वी आर यूटिलाइजिंग दैट, बट एट द सेम टाइम वी आर बाइंग एट द सेम प्राइस, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस. तो हमारा प्रोसेस तो कंटिन्यू सेम होता रह रहा है. So I hope this thing is clear to everyone that we have to buy and sell at the same price for this thing to happen. Now, what are the prerequisites? Some of the important questions that people may be having, I'll just handle it. One is, it can be done on stocks also, it can be done on mutual fund also. So either is there, it is or and it is not both. क्योंकि आपका जो टोटल लिमिट है 1 लाख है. सो आप आज मेरे को बोलो कि मैं म्यूचुअल फंड में 50,000 बेचूं, प्रॉफिट बुक करूं 50,000 का, एंड स्टॉक्स में 50,000 बुक करूं, या यू कैन डू दिस. आप बोलो कि मैं पूरा 1 लाख जो है म्यूचुअल फंड में बुक करूं एंड स्टॉक्स में 0 करूं, यू कैन डू दैट. आप बोलो कि 1 लाख पूरा इसमें कर दूं एंड म्यूचुअल फंड में 0 करूं, यू कैन डू आइदर. सो दिस 3 circumstances आर पॉसिबल. सो यू कैन डू व्हाट सूट्स यू. ठीक है. But the most important thing while doing this entire exercise is to have liquidity to execute the order. Now, what does liquidity mean? It means surplus cash. अब यहाँ पे देखते हैं कैश कैसे. So suppose मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया 94,000 का, and then I have to buy also at 94,000 next morning itself. Only then I will be getting the same price. Otherwise तो NAV चेंज हो जाएगा, and then हो सकता है कि मेरा जो प्राइस पे जिसमें मैंने सेल किया वो ऊपर चला जाए, and then I would be paying the extra, right? मुझे यूनिट्स कम मिलेंगी, so थोड़ा सा कंपाउंडिंग वहाँ पे हैम्पर हो जाएगा.
सो इसके लिए मुझे मेरे अकाउंट में 94,000 एक्स्ट्रा होने चाहिए. नाउ समवन में आस्क, समवन हु इज न्यू में आस्क कि 94,000 क्यों चाहिए आपको. सो द प्रॉब्लम इज ये मेरा T+5 पे आएगा, 5 दिन बाद मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा. ठीक है, तो तब तक मैं अगर 5 दिन तक इसको होल्ड करके रखूंगा कि ये पैसा आएगा, बाद में इसको री इन्वेस्ट करूंगा, देन आई वोंट बी एबल टू री इन्वेस्ट इट एट द सेम प्राइस. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, वॉट एवर ऑर्डर प्राइस आई एम पुटिंग अ सेल ऑर्डर, उतना मेरे पास कैपिटल होना चाहिए कि मैं उसको बाई कर पाऊं सेम ऑर्डर का, so that my compounding is not lost. Is this clear? So this happens on the stock side as well, this happens on the mutual fund side as well. Is easier in mutual fund. I'll tell you the app. Again, this is a non-sponsored video, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है इसमें, but then I find it easy. मैंने ग्रुप में पहले भी बोला हुआ है. This is Kuvera. Kuvera app में there is a thing called as tax harvesting recommendation. So it keeps शोइंग दिस टैक्स हार्वेस्टिंग रिकमेंडेशन. वो अपने आप बता देगा कि इस म्यूचुअल फंड को आप बाय करो, इसको सेल करो, सेम इतना आपको यूनिट बेचना है. वाई? बिकॉज वो अपने आप, उसका एल्गोरिदम है कि वो देख लेता है किसकी आपकी होल्डिंग 1 ईयर से अबव की है. 1 ईयर से लेस में आप बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा एंड दिस थिंग वोंट वर्क देयर. Okay, this is very clear. But then you would say one more question कि I have been doing buy sell or maybe buying randomly over the years, तो पहले कौन सा बिकेगा मेरा. So the principle is कि सबसे पहले जो आपने खरीदा है वो ही सबसे पहले बिकता है. It doesn't matter कि आपने लास्ट मंथ खरीदा है तो वो इस मंथ बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता म्यूचुअल फंड्स में. When you are selling something, तो सबसे पहले जो बाय किया हुआ है वो आपका सबसे पहले सेल होने वाला है. Is this clear? Okay. So can you do it any time around the year? Definitely. तो Kuvera में अगर आप recommendations देखोगे तो it will keep on giving recommendations any time around the year. So it depends on you, आप कब करना चाहते हैं. There are lots of people who do it around March, क्योंकि March last year होता है before the financial year का closure. That's why people do it around March, but lots of people do it throughout the year also. So you need not wait for the year to end to have a tax harvesting process. Another thing that you need to be cautious of is there are lots of fund wherein after 1 year holding there is no exit load, but if there is exit load then do check out. अगर आपके म्यूचुअल फंड जो आप सेल कर रहे हो उसमें exit load है तो you will have to bear that. थोड़ा सा उसमें आपको एक notion change आ जाएगा थोड़ा सा while you are harvesting it. So prefer those funds जहाँ पे आपके exit loads नहीं है. Index funds में exit load नहीं होते beyond 1 year, most of those. So please do check this. अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे टैक्सेस या ब्रोकरेज जो पे करना है वो आपको वहाँ पे बियर करना चाहिए. तो उसका एक आपको, यू शुड हैव दैट थिंग इन योर हेड. आई पर्सनली प्रेफर टू डू इट ऑन द साइड ऑफ म्यूचुअल फंड्स. बट इफ यू हैव सोल्ड समथिंग और आपका ऑलरेडी, सो द ईजी थिंग आई विल टेल यू इज, what you do is you can generate a capital gain report. This is easily available on any of the app that you are using. So it is available for stock holding as well, it is available for mutual fund holding as well. You can go in the respective app and you can click to generate report. You can first see कि आपका LTCG कितना बन रहा है इस साल का. कैपिटल गेन रिपोर्ट आप निकालेंगे. So suppose 50K ऑलरेडी अगर आपका हो चुका है तो do it for only for 50K. Why do you wanna go beyond that? Because that is not helpful. So पहले ये एक्सरसाइज कर लेना, उसके बाद जो भी आपका बाय सेल एग्जीक्यूट करना है ये आपने एग्जीक्यूट करना है. I hope this is clear for everyone. Now other thing comes again, this is something not many people like to do, but if you are someone who would still want to milk it, there is another concept which is called as tax loss harvesting. So वहाँ पे हमने क्या किया था, what we did कि हमने 1 लाख का जो लिमिट था हमारा कि प्रॉफिट पे जो टैक्स नहीं लगता है उसको यूज किया हमने, एंड वी डिड अ बाय सेल अकॉर्डिंग टू दैट सो दैट वी कैन यूटिलाइज दैट 1 लाख लिमिट एवरी ईयर और उस पर हमको टैक्स ना भरना पड़े. एंड वी मिल्ड कि हमको 80-90 हज़ार जो भी बन रहा था हमारा वो हम अगले 10 साल में उतना बचा लेंगे. ठीक है. अनदर थिंग दैट कम्स हियर इज लॉस. तो आपके हो सकता है कुछ पोर्टफोलियो में, चाहे वो म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, चाहे वो आपके स्टॉक्स में हो सकता है, लॉन्ग टर्म आपकी होल्डिंग है. सो ऐसा स्टॉक, मैं स्टॉक के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में ज़्यादा कॉमन हो सकता है. सपोज आई एम होल्डिंग अ एशियन पेंट. ठीक है, जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. एशियन पेंट आज उस पर मेरा लॉस चल रहा है 50,000 का. कितना लॉस चल रहा है? 50,000 माइनस पे वो. नाउ इज दिस अ रियलाइज लॉस और अनरियलाइज लॉस? इट इज़ ऑब्वियसली अ अनरियलाइज लॉस क्योंकि मैंने अपने स्टॉक सेल नहीं किए. ठीक है. सो नाउ व्हाट आई डू इज, अगर मेरा इस पर्टिकुलर ईयर में मेरे गेन्स हैं 1.5 लाख और ये कौन से गेन है? लॉन्ग टर्म.
सो अगर मेरे लॉन्ग टर्म 1.5 लाख गेन है, मैंने 1 लाख प्रॉफिट मिल्क कर लिया, बट मेरा मन है कि मैं 50,000 पे भी टैक्स ना दूं, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल बुक दिस अनरियलाइज्ड लॉस टू अ रियलाइज्ड लॉस। आज मैंने बेचा इसको और कल मैं जाके इसको खरीद लूंगा मार्केट में सेम प्राइस में। अगेन वर्क्स ऑन द एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल कि आपने अनरियलाइज्ड लॉस को रियलाइज्ड लॉस में कन्वर्ट कर दिया और जितने का आपने बेचा, जितना आपने बेचा उतने का ही आपको बाई करना है। सो आपका इफेक्टिव टैक्स क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगेन यू कैन टाइट्रेट इट टू द वे यू वांट। जैसे अगर किसी का 5 लाख का प्रॉफिट हो चुका है इस साल, ठीक है, अब डोंट स्टार्ट लाफिंग कि मेरे अकाउंट में भी प्रॉफिट ही नहीं और आप 5 लाख की बात कर रहे हैं। सम ऑफ द अदर डे इफ यू आर स्टेइंग इन फॉर लॉन्ग टाइम, दिस थिंग विल वर्क फॉर यू, यू विल हैव सच काइंड ऑफ गेन्स। तो अगर 5 लाख का प्रॉफिट है, आपने 1 लाख अपना LTCG टैक्स प्रॉफिट इससे बचा लिया हार्वेस्ट करके, नाउ 4 लाख का है और आपके पास 4 लाख आपको चाहते हो कि आप उस पर टैक्स ना भरो, तो अगेन यू कैन कन्वर्ट योर 4 लाख वर्थ ऑफ अनरियलाइज्ड लॉसेस टू रियलाइज्ड लॉस, provided you are buying it again. If you are not buying it again, then इस entire exercise का कोई मतलब नहीं है. And again, you will need a liquidity of around 4 lakh. So based on the corpus that you want to harvest, आप इस process को कर सकते हैं. The other thing about this, lots of people call it this thing वाइट वॉशिंग ऑफ पोर्टफोलियो, क्योंकि आपके लॉसेस इसमें आप वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट अराउंड मार्च. तो देखना मार्च एंड के आसपास आपको एक छोटा सा डिप मिलता है. दिस इज बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर कैरिंग आउट 31st के आसपास दिस एंटायर एक्सरसाइज इज कैरिड आउट एंड यू विल सी वाइट वॉशिंग ऑफ पोर्टफोलियो और थोड़ा सा मार्केट में डिप आता है इस कारण से. ठीक है. The other thing that you need to understand is short term losses जो आपके होते हैं, it can offset against LTCG and STCG both. तो short term gains भी अगर आपके हैं तो आप उसको offset कर सकते हैं, but long term losses can be offset against only long term gains. So this thing should be clear. So this was all about tax harvesting, where we learned about tax profit harvesting, tax loss harvesting. The app that I use, again this is not a recommendation, but it makes it easy for me to execute that. If, do let me know if you're practicing tax harvesting or not, or did you like the concept. If you have any queries, you can feel free to ask me in the group, or you can post it as a comment. Thank you so much.